हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम काकाशी का स्केच बनाने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। फ्रेंड्स, हम इसमें ग्रेफाइट एंड चारकोल दोनों का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने गिट्स लाइन तो ड्रा कर लिया है एचबी पेंसिल की मदद से। एंड फ्रेंड्स, इसमें हम एचबी पेंसिल की मदद से ही आउटलाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम आउटलाइन करेंगे, फिर इसमें शेडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली, मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए हम बनाते हैं, जब तक आप टाइम लैप्स देख। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं। हमने इसका आउटलाइन तो कर दिया है। फ्रेंड्स, इसमें अब हम शेडिंग करेंगे ग्रेफाइट एंड चारकोल दोनों से ही। फ्रेंड्स, मैं इसमें शेडिंग जो है काफी ज्यादा डिटेल्स में करने वाला हूँ। आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने ही रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। फ्रेंड्स, ये जो है काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी। एंड में लास्ट में आप देखने काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं ग्रेफाइट एंड चारकोल दोनों से ही इसमें शेडिंग करने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो है लाइट इफेक्ट्स काफी ज्यादा हैं, अभी आपको दिखने रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट शेडिंग करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं, जब तक आप टाइम लैप्स देखिए। सो फ्रेंड्स, हमारी ड्राइंग कुछ इतनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका बैकग्राउंड मैंने चारकोल से बनाया है। एंड जो ये हेड्स हैं ग्रेफाइट से बनाए हैं एचबी पेंसिल से। फ्रेंड्स, अब हम एक्स्ट्रा गेट लाइन इरेज करेंगे कैनडेबल इरेजर की मदद से, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। फ्रेंड्स, इसको बस आपको ऐसे रफ करना है। फ्रेंड्स, जो है आउटलाइन वो लाइट हो जाती है एंड गेट्स लाइन जो है वो खुद ही इरेज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें शेडिंग करेंगे ग्रेफाइट एंड चारकोल की मदद से। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं, जब तक आप टाइम लैप्स देखिए।
तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। फ्रेंड्स ये मैंने ग्रेफाइट एंड चारकोल से बनाई है एंड इसकी आउटलाइन मैंने HB पेंसिल से करी है। तो फ्रेंड्स ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही था, तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय।